फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो मिस्टर नरेंद्र मोदी की जो प्रेजेंट विजिट है यूएसए में। यस्टरडे ही रीच देयर और उनका बहुत ही वार्म वेलकम करा गया एयरपोर्ट के ऊपर। बहुत तादाद में इंडियन डियास्पोरा जो है एयरपोर्ट पे आया हुआ था और मोदी जी ने सबको पास जा के उनको वेलकम किया लोगों ने, और वेलकम और मोदी जी ने भी उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। और जब वो होटल पहुंचे तो होटल के बाहर भी बहुत सारे इंडियंस खड़े हुए थे जो कि मोदी का बेसब्री से बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। और जब मोदी जी पहुंचे तो सब ने उनका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया, हाथ जोड़ के नमस्ते करी गई। और मोदी जी मोदी जी मोदी जी के नारे लगते रहे। मोदी जी होटल के अंदर पहुंचे तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इंडियन डियास्पोरा था। मोदी जी से उनके ऑटोग्राफ ले रहा था, मोदी जी को उनकी अपनी बनाई हुई मोदी जी की पिक्चर उनको भेंट कर रहा था। बहुत ही एक खुशनुमा माहौल था वहाँ पर, एक इमोशनल माहौल था और सारी दुनिया ने उसको देखा और देखा कि किस तरीके से मोदी जी का जो है वो उनके इंडियन जो डियास्पोरा है वो उनकी वेलकम करता है। फिर मोदी जी ने कुछ देर के बाद उनकी अपनी मीटिंग शुरू हो गई और उन्होंने थिंक टैंकर से और कुछ कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों से मुलाकात करनी न्यूयॉर्क में शुरू कर दी। और जैसा मैं बता रहा था आपको कि जो वेरियस पीपल विल स्टार्ट मीटिंग, जो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो थे थिंक टैंक स्पेस टुडे के, और उनके साथ मिले, उनके साथ उन्होंने डिस्कस करा जियो पॉलिटिक्स के बारे में, जियो इकोनॉमिक्स के बारे में, टेररिज्म के बारे में, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई उसके अंदर। और वहाँ के जो लोगों ने भी अपने अपने जो पॉइंट्स थे वो अपने काफ़ी जो थिंक टैंक करते हैं उन्होंने फ्रीली कई चीज़ें डिस्कस करी गई। और उनकी मुलाकात जो थी उसके अंदर एक एक आदमी ने अपने अपने पॉइंट्स डिस्कस करे और मोदी जी ने उनका बहुत सरलतापूर्वक जवाब दिया। और they were quite impressed with this meeting, the way the Modi ji was responding to them. So, and so this meeting was very successful, and we met over there in this meeting as Michelle Foreman, Daniel Russells, Max Abrahams, Jeff M. Smith, Eldridge, Paul Bay, गुरु सॉल्वे। तो उसमें कुछ एकेडमिशियन भी थे जो पीएम से मिले, जैसे कि रतन लाल, नलिनी बदन धोधी, प्रदीप खोसला, सतीश त्रिपाठी, चंद्रिका टंडन, जगमोहन राजू, महादेव राजन, अनुराग मलरे. So a lot of people, they met Mr. Modi, and they have also given their books or some paintings to Mr. Modi. And then Mr. Modi also met Mr. Elon Musk. And Elon Musk, he also tweets that meeting was, so it was a great conversation. और मोदी साहब ने भी ट्वीट करा कि multifaceted conversation on issues ranging from energy to spiritualities. So Musk ने कहा कि that the Modi ji is quite concerned about India, and very soon he will come to India, and he is very keen to invest in India also. So they look forward for a good relation, and Musk says I would look forward a good relation with India, and my meeting was very fruitful and a great conversation.
with PM Modi. Uh, correspondent ने उनसे पूछा कि how was the meeting. He said it was good. He was very honored to meet Mr. Prime Minister Narendra Modi. Uh, we have exchanged a good conversation with each other, and very soon I look forward to go to India. Most probably in the next year, he will definitely go to India. That is what Mr. Musk said. चलिए अगले इसके ऊपर चलते हैं, न्यूज़ पे चलते हैं। तो जो इंडिया का डायस्पोरा है वहाँ पर अमेरिका में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। सेकेंड लार्जेस्ट डायस्पोरा इन इंडिया। सो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो दोनों जो भी रिपब्लिकन है डेमोक्रेट्स है, दे वांट टू अट्रैक्ट दिस इंडियन डायस्पोरा Indian community in America, because these people play a very important role during the elections. तो इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ पे अराउंड 45 lakhs है, which is around 1% of the country. And apart from this, the Indian diaspora is paying around 6% of the total tax to America. So India is the second largest immigrant community in USA. So this both the politicians, both the parties, they are quite eager to maintain a very good relationship with Indian diaspora. So abhi when Modi is there, so both the parties is giving a lot of attention to the Modi, in a view that ultimately this diaspora will help them in in the coming elections in 2024. So दूसरी तरफ देखा जाए जो इंडियन अमेरिकन हैं, वो नॉट ओनली दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, ये लोग जो अपना इम्पोर्टेंट रोल है वो सेनेट में भी करते हैं, हाउस में भी करते हैं, एंड very strong contingents representing in the Senate. And in this area, like there are 4 representatives in the House is Amy Bera, Ro Khanna, Raja Krishnamurthy, Parmila Jaipal. So there are few mayor also here. And according to the report, 35 Indian origin judges जो हैं across the USA में हैं, और रिकॉर्ड नंबर ऑफ कम्युनिटी इन जुडिशियल अपार्टमेंट. तो the Indians diaspora is playing a very important role in USA, and they have pitched a very important their contribution to the USA, not only in USA, in various areas like economy, in education, in judiciary, or in Senate and all. So they cannot ignore Indians like that in the America. So because of this, if you put everything into one shell, that make India more stronger and reflects very good picture of India. And everyone is playing their own role in contributing, improving the image of India. And now India is maintaining a position where India can play a very important role in international domain. So considering all these facts, that's why America is very eager to meet Mr. Modi, and a lot of arrangement is being done, like that Jill Biden जो first lady है, she's arranging the dinner which is to be held on Thursday evening. It's a state dinner with Republic of India.
एंड शी इज़ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। और उसके पहले उन्होंने मीडिया को भी एक प्रीव्यू दिया उसका कि वाइट हाउस में किस तरीके से क्या क्या अरेंजमेंट्स है, क्या क्या सर्व करा जाएगा, एंड इट विल बी ऑल वेजिटेरियन फूड विल बी सर्व्ड इन द डिनर तो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है इंडिया के लिए कि किस तरीके से इंडिया की खातिर करी जा रही है, किस तरीके से इंडिया की एक एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, और वो भी फर्स्ट लेडी इज़ टेकिंग पर्सनल अटेंशन टू दिस। और फर्स्ट लेडी जो है फिर उनको जब मोदी साहब मिलेंगे उनको थर्सडे को, तो वो उनके साथ विजिट पे भी जाएंगे नेशनल साइंस फाउंडेशन इलेक्सडेंट्रिया वर्जीनिया में। फर्स्ट लेडी जो है वहाँ पे उनसे जो she will introduce for the student over there and the lecturers and other stakeholders. She will introduce with prime minister, और उसमें जो एजेंडा जो रहेगा वो करियर कनेक्टेड लर्निंग एंड वर्कफोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड पार्टनरशिप बिटवीन हाई स्कूल्स कम्युनिटी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ विद employers. So she will also introduce with the students from US and India who are participating in this event. So काफ़ी कुछ करा जा रहा है apart from meeting with bilateral meeting and the speech of Mr. Modi in Senate. So and he will also be given a guard of honor when he is there on on 22nd there in Washington. So जो उनका एजेंडा जो रहेगा वो यही रहेगा कि भाई 21st मॉर्निंग में 7 बजे अराउंड 7 o'clock वहाँ पे यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में के ग्राउंड में जो है योगा डे बना में सेलिब्रेट करा जाएगा। मोदी ज्वाइन द नेक्स्ट डे ही विल ज्वाइन द he will be given a guard of honor over there and being received by the President Biden and First Lady, and then given a guard of honor over there. And later we will have a joint session of Congress. It's an honor to that it is a second time he's being given this honor, where he's giving his address to the joint session of Congress. And then later they will have a bilateral meeting with Mr. Biden, and they will discuss various issues relating to industrialization of defense equipments and semiconductor, drone, so, and a lot of Indo-Pacific issues, and how jointly they can work on AI, artificial intelligence, and exchange of technologies, educations, cultures. So a lot of things is to be discussed, and a lot of MOU is expected to be signed by both the um, persons. So then, as I told you, that there is a dinner in the evening, and then later the next day, 23rd, Prime Minister meet Vice President and Kamala Harris, and he will also meet Blinken. And then in the evening around 7 o'clock there is a address to the Indian American community. कुछ 2-3 न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, मेरे को लगता है कि आपको पसंद आई होगी। Thank you very much for watching my channel, and I request you to please like my channel, subscribe my channel, and please